Okay, assalamu alaikum everyone. I'm really sorry for the delay. I got late while reaching home, and then it took some time to set some things up. So now we can finally start. Today we are going to be doing two S1 papers, inshallah, paper 5.1 and paper 5.3 from May-June 2022 session. Okay, you दोनों papers कर रहे होंगे, but I'm not going to do all of those questions. I'm going to be doing the questions that are relatively more difficult. Okay, जो ज़्यादा आसान वाली questions है सिर्फ वो मैं skip कर रहा हूँ, ठीक है? So that it takes it saves our time a bit. हम दोनों papers आज कर सके, ठीक है? Paper 5.2 हमने already किया हुआ. We completed that paper I think last week before Eid. You can find that in the yearly past papers playlist. The link for that is given in the description below as well. Okay, now for those of you who are new, make sure that you subscribe the channel. You'll find a lot of other useful content here as well. You can look at the description below. I've uploaded my recordings for all the crash courses, paper 1, paper 3, M1 and S1, in which you can find the complete syllabus covered. And you'll also find some quick revision videos, which a lot of students find helpful every year before their exams. And also, you'll find a link to the playlist for yearly past papers in the description, in which you can find all the other yearly past papers that I've solved until now from 2021 and 2022, and also 2023 March papers are also solved. Okay, so today I'm going to be doing these two papers, May-June 2022, paper 5.1 and paper 5.3. Okay, ये दो papers हम आज कर रहे होंगे. इनमें से जो relatively ज़्यादा complicated questions, I'm going to be focusing on those questions. All right, let's start with this thing. So this is paper 5.1 for now, okay? All right, so the first question is on arrangements. This is permutations. Now, normally permutations, combinations वाला question थोड़ा end पर आ रहा होता है, but शुरू में आ गया, most likely it's going to be a relatively easy one. Let's start with this one, permutation, combination वाले questions. I try कि हम सारे ही कर लें, जो भी paper हम कर रहे हैं उसमें से, ठीक है? So let's start with this one. It says find the number of different arrangements of the 8 letters in the word deceived in which all 3 E's are together and the 2 D's are together. Okay. अब देखें इसमें repetitions कौन सी हो रही हैं. We have E, E and E. They want all the 3 E's together. Okay. इसके अलावा और कौन से आपके पास repeated letters हैं? You have D and D, and the other letters are C, I, V. So they are all different letters. So D's repeat हो रहे हैं और E's repeat हो रहे हैं. उसने क्या कहा है? उनको आपने combine कर देना. Okay. Now, how do we think about this? We can use this box's representation if we want, just to think about this. So originally आपके पास 8 letters हैं, तो आपके पास क्या होना था यहाँ पे? You would have had 8 boxes like this. ठीक है? इनमें आप उन 8 letters को place कर सकते हो. But now what they've said is, they want all the E's together and all the D's together. अब 3 E's है आपके पास, right? तो इसका मतलब ये आप इन 3 E's वाले boxes को, आप 3 boxes को combine करके उनको merge करके एक single box बना दो. All right? So हम 3 boxes को merge करते हैं और इनके अंदर हम क्या करते हैं? 3 E's को place कर देते हैं. Okay? Similarly, the 2 D's have to be together. उसके लिए हम 2 boxes को merge करके एक box बना देते हैं. And we place D's there in that single box. And in the remaining boxes, we're going to have C, I, and V. अब देखें total boxes आपके पास कितने हैं, उनके arrangements कितने होंगे? You have 5 boxes in total. So you have 5 factorial for those boxes. Okay, and then you think about the arrangements for the letters inside these boxes. अब देखें E's identical हैं, तो उनकी arrangements तो आपको handle करने की जरूरत नहीं है. Identical objects की arrangement तो कोई नहीं होती है. Similarly, D's भी identical हैं, उसमें भी आप कुछ करने की जरूरत नहीं है. So 5 factorial is going to be your final answer here. इसमें आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? If you wanted to arrange E's as well, how do you think about that? You would say, अच्छा 3 E's हैं, 3 factorial, लेकिन तीनों ही identical हैं, तो आपको 3 factorial से divide करना पड़ेगा. So it turns out to be 1 eventually. अगर आप D's के arrangements देखो, you could think of 2 factorial, but both of them are identical, so you divide by 2 factorial. तो ये पूरा 1 ही हो जाता है. अब उसको consider करें या ना करें, it doesn't make any difference.
So you have 5 factorial here. You have to write down the final result है. आपने इसको as it is नहीं छोड़ना, आपने इसको evaluate करना है. 5 factorial की value क्या होती है? This is 120, and that is going to be your final answer here. Okay, so you write 120 here like this. Okay, let's look at the second part. It says find the number of different arrangements of the 8 letters in the word deceived in which the 3 E's are not all together. Okay. अब इस तरह के प्रॉब्लम्स है ना, आपको ये स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है. उसने क्या कहा है? The 3 E's are not all together. इसका मतलब ये है कि ये केस जो है ना, ये नहीं अलाउड. However, you can have 2 E's together and that is okay. 2 E's इकट्ठे हो सकते हैं, 3 इकट्ठे नहीं हो सकते. ठीक है. इस तरह के प्रॉब्लम्स में आप क्या करते हो? आप वो वाला केस फाइंड कर लेते हो जिसमें वो सारे इकट्ठे हैं और उनको टोटल में से माइनस कर लेते हो. राइट. सो टोटल cases with no restrictions, and you subtract from that the cases in which the 3 E's are together. That is what we're going to be doing here. Okay. Now let's think about that. So in total, we have 8 letters. Let me just copy this. यहाँ पे इसको paste कर देता. Okay, so might need a few more of them. Let's keep it like this for now. Okay, तो हमें करना क्या है? हम देखते हैं पहले टोटल केसेस कितने बनते हैं जहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. ठीक है. जब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उनको हम इनफैक्ट डायरेक्टली कर लेते हैं. इस पे बाद में आते हैं. टोटल केसेस विदाउट रिस्ट्रिक्शन. लेट्स फाइंड दैट आउट फर्स्ट ऑफ ऑल. टोटल अरेंजमेंट्स without any restrictions. How many would they be? आप देखें टोटल लेटर्स कितने हैं आपके पास? 8 लेटर्स टोटल हैं. तो उनको अरेंज करने के कितने वेज होंगे? 8 factorial. However, out of them there are 3 E's which are identical, so we divide by 3 factorial because of that, and there are 2 D's which are identical, we divide by 2 factorial because of that. So total without any restrictions तो आपके पास यहाँ पे directly आ जाएगा. It's going to be 8 factorial divided by 2 factorial and 3 factorial, and that is giving me 3360. This is the total number of arrangements of the letters in the word deceived without any restrictions. ठीक है. अब हम देखते हैं कि जब वो रिस्ट्रिक्शन आप अप्लाई करते हैं तब कितने होते हैं. कि अगर 3 E's को इकट्ठे करते हैं, अगर 3 E's को इकट्ठे करते हैं इसका मतलब ये है कि हमें एक बॉक्स में क्या करना है? उन 3 E's को प्लेस कर देना है. And then we have 5 other boxes apart from that. उन 5 boxes में आपके पास क्या आ रहा होगा? बाकी लेटर्स आ रहे होंगे which are 2 D's. Then you have C, I, V. These are the remaining letters that you have. Okay. अब हम देखते हैं ये वाला केस, 3 E's together वाला केस. 3 E's together. Let's see what happens in this particular case. अब देखिए total boxes कितने हैं आपके पास? Total outer boxes. There are 6 boxes here, right? So for those 6 boxes, we're going to have 6 factorial ways of arrangements, right? But in 6 boxes में से, do we have any boxes that are identical? 2 boxes are going to have D in them. तो D's तो identical हैं. तो आपको क्या करना पड़ेगा? उन इस 6 factorial को divide करना पड़ेगा 2 factorial से to account for this कि D repeat हो रहा है. So 6 factorial divided by 2 factorial. Why? Because of these 2 D's. Okay. And then we think about this box. E's की arrangements कितनी होंगी? ये तो कोई भी नहीं होगी. E सारे identical है. ये सिर्फ 6 factorial over 2 factorial हो जाएगा. That's going to give us 720 divided by 2, which is 360. So the number of arrangements in which the 3 E's are together are 360. So we have the total, we have the 3 E's together. What's the required number of arrangements? Required number of arrangements क्या है? जहां पे E's together नहीं है, वो हम कैसे निकालेंगे? Total cases जो हमने find किया ऊपर 3360
We subtract from that the cases in which the three E's are together. That's 360. And that gives us 3000 as our result. And that is our final answer here. 3000 ways hain in letters ko arrange karne ke in which the three E's are not all together. Okay? तो आपने वो वाला केस फाइंड कर लिया जब वो टुगेदर है. Right? This is E's together. और टोटल में से आपने क्या किया? माइनस कर दिया. And you get the result. Okay? That was part B of this. Let's move on to question number 2. Okay, so we apparently have another permutation combination question. This time it seems to be combinations. Let's think about this. There are 6 men and 8 women in a book club. The committee of the club consists of 5 of its members. Mr. Lan and Mrs. Lan are members of the club. In how many different ways can the committee be selected if exactly one of Mr. Lan and Mrs. Lan must be on the committee? Okay, अब देखें, exactly one of them. That means या तो Mr. Lan होंगे या Mrs. Lan होंगी. इन दोनों में से एक हो सकते हैं टाइम के ऊपर. दोनों भी नहीं हो सकते और ये भी नहीं हो सकते दोनों ना हो. Okay? अब total आपके पास कितने हैं? You have 14 people in total. 8 plus 6, that is 14. उन 14 में से what they are saying is इन दोनों में से कोई एक बंदा जो है ना, मतलब एक बंदा या बंदी ये टीम में होंगे, उस कमेटी में होंगे और दूसरा नहीं होगा. Now let's say हम कहते हैं मिस्टर लैन जो है वो कमेटी में है और मिसेस लैन जो है वो कमेटी में नहीं है. This could be one possibility. Right? This is one possible case that we have. Mr. Lan है और Mrs. Lan नहीं है. How many cases do we have for this? अब देखें, इन दो के बारे में तो आपने डिसाइड कर लिया ना ऑलरेडी कि मिस्टर लैन को आपने सेलेक्ट करना है और मिसेस लैन को आपने सेलेक्ट नहीं करना. तो बाकी कितने लोग रह गए आप? रिमेंबर टोटल कितने हैं? 14 है. द टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट वी हैव इज 14. इन दो के बारे में आपने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है कि मिस्टर लैन को होना चाहिए. दिस इज वन पॉसिबल केस, राइट, कि मिस्टर लैन होना चाहिए, मिसेस लैन नहीं होनी चाहिए. ओके, बाकी कितने लोग बचे आपके पास? 12. Out of those 12 remaining people, how many do you want to select? एक देखें आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया हुआ है. कितने सेलेक्ट करने थे आपको टोटल? आपको 5 सेलेक्ट करने हैं. कमेटी के लिए आपको 5 सेलेक्ट करने हैं. एक आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया. How many more do you have to select? 4. So it's going to be 12C4. So in the case where you select Mr. Lan and do not select Mrs. Lan, the number of cases you have is 12C4. Let's evaluate this and see what that turns out to be. 12C4. This is giving me 495. Now there could be another possibility. And the other possibility is कि आप कहें कि अच्छा Mr. Lan को नहीं select करता है और Mrs. Lan को select कर लेता है. What about this case? Now it's exactly the same situation. आपने इन दोनों में से अब कहा है कि Mrs. Lan को select करना है. How many people are you left with? जिनमें से आपने अब चूज करने हैं. 12 लोग रह गए हैं इसमें भी. उनमें से कितने और चूज करने हैं? 5 में से एक तो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया Mrs. Lan. You have 4 more to select, so 12C4 इसके लिए भी हो जाएगा. That's also going to be 495. These are two possible cases. You could either have the first case or the second case. इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है. तो हम क्या करेंगे? Total number of cases कैसे आएंगे? We would just add these two up, and that's going to give us a result. 495 plus 495. That turns out to be 990, and that's our final answer. This is the number of ways in which this committee can be selected such that it satisfies the given conditions. All right. Let's look at part B now. It says, in how many different ways can the committee be selected if Mrs. Lan must be on the committee and there must be more women than men on the committee? Okay, now that's interesting. अब देखें आपके पास men or women है. How many men do we have in total? We have 6 men in total. And how many women do we have in total? We have 8 women in total. अब उसने क्या condition दिया? Mrs. Lan must be on the committee. So यानी कि Mrs. Lan का decision तो आपने ले लिया. उसमें तो कुछ आपके पास रह ही नहीं गया, right? So Mrs. Lan is already selected. तो अब बाकी 14 में से कितने लोग रह गए? 13 रह गए. She is already selected. So उनको अब कुछ भी नहीं करना, right? So she's on the side now. How many women are we left with? We had 8 women in total.
अब बाकी कितनी रह गई आपके पास? 7 रह गई, तो हम इस 8 की जगह पे क्या करते हैं, 7 कर लेते हैं। ओके, अच्छा, लेट मी एक्चुअली जस्ट कीप इट लाइक दिस फॉर नाउ। इसको भी 8 रहने देते हैं, वरना फिर वो कंडीशन दूसरी आपको कंफ्यूजन हो जाएगी थोड़ी सी। मोर वुमेन देन मेन करनी है ना, तो हम पहले वो केसेस बना लेते हैं, ठीक है। मोर वुमेन देन मेन के कौन कौन से केसेस बनते हैं, लेट्स एक्चुअली राइट इट डाउन फर्स्ट। टोटल कितने सेलेक्ट करने हैं? टोटल आपने सेलेक्ट करने हैं 5। Okay, so women should be more than men. One possibility is that all of them are women, right? Because total 5 select करने हैं ना, तो आप सारी women select कर लो और कोई भी man नहीं select करो. That's one possibility. Another possibility is that you select 1 here and 4 here. Another would be that you select 2 men and 3 women. These are the 3 possible cases that you have. Okay? अब ये आप कैसे evaluate करेंगे? इनके number of cases आप कैसे evaluate करेंगे? That's where you have to be slightly careful. ना? So we have men here and women here. I'm going to put them in different colors. Okay. अब देखें first case में देखें 6 में से आप कितने men select कर रहे हो? कोई भी नहीं. So that's a 6E0. Okay. अब second case में 8 में से आपने 5 women select करनी है. लेकिन remember Mrs. Land is already selected. Okay. तो मस्त फिर आपने चूज क्या करना है? बाकी जो 7 है उन 7 में से आपने 4 और चूज करना है. So it's going to be 7C4, not 8C5. It's going to be 7C4. Okay. अच्छा, उसके बाद the next possibility is 6 men में से आपने 1 man select करना है. So that's 6C1. And then out of 8 women, you have to select 4. But again, remember, Mrs. Lan is already selected. तो टोटल वुमेन बाकी कितनी बची? 7. बाकी 7 में से आपने कितनी और सेलेक्ट करनी है? 4 में से एक तो मिसेस लाइन है, आपको 3 और सेलेक्ट करनी है. सो दैट्स 7C3. एंड देन इन द फाइनल केस वी हैव 6C2 फॉर मेन. 6 में से आपको 2 मेन सेलेक्ट करने हैं. एंड देन out of 8 women you want 3, but Mrs. Lan is already selected again. 7 women में से आपको बाकी 2 और चूज करने हैं. सो दैट्स 7C2. ये तीनों केसेस आप इवैल्यूएट कर लें, देखें आपके पास क्या आता है. First case देखते हैं 7C4. Let's see what that turns out to be. 7C4. This is giving me 35. So this is 35. Then you have 6 into 7C3. That is 210. And then 6C2 into 7C2. That turns out to be 315. These are 3 possible cases that you have. You just add all of them up and see what that gives you. 35 plus 210 plus 315. And that has given me 560. And that is your final answer. This is the number of ways that you have in this case, 560. Okay, I hope that makes sense. This is what we do in this part. All right, let's move on to the next one now. That was question number 2. Question number 3 was the times taken to travel to college by 2,500 students are summarized in the table. Draw a histogram to represent this information. Now, this is pretty straightforward. I hope you can do it. I'm not going to do this part. Histogram banana hai, aap bana le. Remember to label the axes. Vertical axis pe frequency density honi chahiye. Horizontal axis pe you should have this variable time. आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी क्लास विड्थ निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालेंगे, उनको प्लॉट कर देंगे. ठीक है, गैप्स नहीं हो सकते हिस्टोग्राम के दरम्यान में. कीप दैट इन माइंड एज वेल. सो यू कैन डू दैट. सेकंड पार्ट में क्या है? उसने मीन दिया हुआ है. उसने कहा मीन इज 31.44 बेस्ड ऑन दिस डेटा दैट यू हैव. उसने इसलिए दे दिया कि आपको मीन नहीं कैलकुलेट करना पड़े, ऑल्दो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो उससे. You have to calculate an estimate of the standard deviation of the times taken to travel to college. Standard deviation का formula apply कर लें. Remember इसके आपको midpoints use करने होते हैं. फिर आपको आपके पास formula है standard deviation का sigma x square f divided by sigma f minus expected value of x या फिर mean of x. ये formula sheet में दिया होता है. इसका whole squared and then you take square root of that. Just apply this formula. X square f calculate करें, उन सबको sum कर लें. Divide by sigma f minus this mean का square और इसका square root ले लें. ठीक है, you can do that. That's not that difficult. फिर आपने upper quartile find करना है, you can do that.
Yeah, let me just actually just do this last part. It says it was later discovered that the times taken to travel to college by two students. Okay, what was the question about? It's the times taken to travel to college by 2,500 students. Okay, the time taken by 2,500 students वो आपको यहाँ पे summarize हुआ है. So for example, there are 440 students जिनको 0 से 20 minutes के दरम्यान में लगता है, and so on. Now it says the it was later discovered that the times taken to travel to college by two students were incorrectly recorded. So out of these 2,500 students, दो students का data यहाँ पे गलत आ गया. ठीक है, उसमें हुआ क्या है, एक स्टूडेंट का टाइम जो है वो 15 लिख दिया इंस्टेड ऑफ 5 और एक और का 65 लिख दिया इंस्टेड ऑफ 75. ये दो एरर्स हो गए. Without doing any further calculations, we need to state with a reason whether the estimate of the standard deviation in part B would be increased, decreased, or stay the same. Okay, now think about this. 15 की जगह पे 5 आ गया. Remember, आपके पास ये actual data नहीं है, ये ungrouped data नहीं है, group data है. अगर तो ungrouped data होता तो फिर तो definitely आपकी standard deviation change हो रही होती कुछ ना कुछ. ठीक है, लेकिन this is group data. 15 की जगह पे उन्होंने 5 लिख दिया, और maybe the other way around actually, उन्होंने 5 की जगह पे 15 लिख दिया. Let's look at the data that's given. 5 अगर होता तो वो कहाँ पे आ रहा होता है इस टेबल के अंदर? फर्स्ट इंटरवल में आ रहा होता. 15 कहाँ पर आ रहा है? वो भी फर्स्ट इंटरवल में आ रहा है. तो आपकी फ्रीक्वेंसी तो फर्स्ट इंटरवल की चेंज नहीं हुई, दैट रिमेन्स अनचेंज्ड. ओके, सो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा. जो हमने 5 की जगह पे 15 लिख दिया, रिकॉर्ड कर लिया था, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. ओके, नाउ लेट्स थिंक अबाउट द अदर वन. दूसरा क्या था? 65 एक आपने लिख लिया इंस्टेड ऑफ 75. ओके, अगर 65 होता तो कहाँ पे आता? वो लास्ट इंटरवल में आ रहा होता. अगर 75 होता तो वो भी लास्ट इंटरवल में आता. अगेन, इससे भी आपके फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आपकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन की कैलकुलेशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सारा डेटा उन वैल्यूज को करेक्ट करने के बाद भी इसी तरह से ग्रुप्ड होएगा. इन्हीं इंटरवल्स में आपकी इन्हीं यही फ्रीक्वेंसीज आ रही होंगी. ठीक है, अब उसने क्या कहा है? State whether the standard deviation increases, decreases, or stays the same. We say the standard deviation actually stays the same. Why? Because the frequencies of all intervals are still the same even after these corrections. जो सारे intervals हैं, उन intervals के अंदर आपके पास same frequencies ही रहेंगी, वो change नहीं हो रही होंगी. ठीक है, so standard deviation जो है that stays the same, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा. Okay, I hope that makes sense. That was this last part. बाकी parts इसके आसान है, वो आप कर सकते हैं. Let's move on. Question number 4. Jacob has 4 coins. One of the coins is biased such that it is thrown. When it is thrown, the probability of obtaining a head is 7/10. The other 3 coins are fair. Jacob throws all 4 coins once. The number of heads that he obtains is denoted by the random variable x. The probability distribution for x is as follows. Show that a equals 1/5. ये आपने सबसे पहले शो करना है. अच्छा, now x क्या represent कर रहा है? या x is representing the number of heads. Number of heads is denoted by x. तो 1 head आने की क्या probability है out of 4 coins? अब देखिए 1 heads वाले कौन कौन से cases आपके बनेंगे. आपके पास एक possibility तो ये हो सकती है first head आ जाए और फिर बाकी सारे tails आ जाए. This is one possible case, right? Another possibility could be, remember these are the first coin is biased, the others are unbiased. So let's do it this way. Let's say हम यहाँ पे number कर देते हैं, number 1, number 2, number 3 and number 4. ये आपके coins है. तो एक possibility क्या है? पहला head आ जाए, बाकी सारे tails आ जाए. That's exactly 1 head. And then the remaining possibilities would be tail, head, tail, 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 head, tail and tail, 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 head. ये आपके सारे cases हैं जहाँ पे आप कह रहे हो
x की वैल्यू 1 हो सकती है। x की वैल्यू 1 यानी कि नंबर ऑफ हेड्स 1 है, तो ये 4 केसेस बन सकते हैं। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज कैसे आएंगी? यू सी, पहला कॉइन हेड आने की प्रोबेबिलिटी उसने दी हुई है 7/10, सो दैट 0.7। बाकी सब फेयर कॉइन्स हैं, यानी उनमें हेड्स और टेल्स की प्रोबेबिलिटीज इक्वल है एक दूसरे के साथ। ओके, तो टेल्स कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। यू से 0.5 into 0.5 into 0.5, that becomes 0.5 क्यूब। ऑलराइट, अच्छा सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस में टेल्स फर्स्ट कॉइन पे आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 0.3। बाकी में इसमें हेड आ रहा है पर बाकी में टेल्स आ रहे हैं। रिमेंबर, बाकी तीनों कॉइन्स तो फेयर हैं, उनमें हेड और टेल्स की प्रोबेबिलिटीज इक्वल हैं, तो 0.5 into 0.5 into 0.5 ही हो रहा होगा, दैट्स 0.5 क्यूब। एंड देन द थर्ड केस इज वेल, फर्स्ट में टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। बाकी सब में 0.5 0.5 प्रोबेबिलिटीज ही हैं, नो मैटर वेदर इट्स अ हेड्स और अ टेल्स, तो वो आपके पास वैसे ही रहेगा। और लास्ट केस भी इसी तरह से बन रहा होगा, 0.3 into 0.5 होल क्यूब। इन सारे केसेस को आप ऐड कर लें, देखें आपके पास क्या आता है। ठीक है, कैलकुलेटर में डालें, पहला वाला केस देख लें और उसमें ऐड कर लें 3 times द सेकंड केस, या फिर आप उन सबको अलग अलग ऐड कर लें, दैट्स योर चॉइस। 0.5 into 0.5 0.7 into 0.5 क्यूब multiplied by plus 0.3 into 0.5 क्यूब। अब ये 3 दफा आ रहा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा इसका, इन सबको ऐड करके, दैट इज गोइंग टू बी 1/5। एंड दैट्स व्हाट वी हैड टू प्रूव हियर। उसने कहा था a की वैल्यू प्रूव करें कि 1/5 आती है, so we can say the value of a from this is 1/5। And then we have to calculate the values of b and c. How do we do that? We can use the same idea here again. x equals 2 पे देख लें क्या आता है। 2 चेक कर लें, 3 चेक कर लें, कोई भी इन दोनों में से एक निकाल लें, और फिर जो रिमेनिंग होगा वो तो 1 में से बाकी सारी माइनस करके हम निकाल ही सकते हैं। ठीक है, x equals 2 पे चेक कर लें या x equals 3 पे चेक कर लें, you can choose to do any one of them। x equals 2 देखते हैं वो कब होता है, 2 हेड्स कैसे आ सकते हैं? 1 2 3 4। ओके, 2 हेड्स के कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? ये थोड़े ज्यादा केसेस बनेंगे इनफैक्ट, क्योंकि वो 4C2, तो ये 6 केसेस बन जाएंगे। x equals 3 करेंगे ना, उसमें केसेस आपके कम बनेंगे, so that's actually better to do। x equals 3 कैलकुलेट कर लेता है, उसमें केसेस थोड़े कम बन रहे होंगे। x equals 3 का मतलब है 3 हेड्स चाहिए आपको। वन पॉसिबिलिटी कुड बी दैट यू हैव heads, 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 tails, then you can have heads, heads, tails, heads, heads, tails, heads, heads, and tails, heads, heads, heads. These are the 4 possible cases that you have। दोबारा से उसी तरह से देखें, फर्स्ट में हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7। बाकी सब तो सेम ही रहेंगे, 0.5 क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 केसेस में देखें, फर्स्ट में हेड्स आ रहे हैं तो 0.7 होगा, बाकी 0.5 क्यूब भी होंगे, और थर्ड में भी ऐसे होगा 0.7 into 0.5 क्यूब। लास्ट वाले में क्या हुआ? फर्स्ट कॉइन में टेल्स आ गया, फर्स्ट कॉइन में टेल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3, तो फर्स्ट कॉइन में हमारे पास 0.3 आ जाएगा यहाँ पे, into 0.5 whole cube। Now you add all of these probabilities and see what that turns out to be। 0.7 into 0.5 का क्यूब, इसको 3 times कर लें तो multiply by 3 plus 0.3 into 0.5 cube, and that is giving me 3/10। This is the value of c। ये आपके पास c की वैल्यू आ गया, c is 3/10। ठीक है, ये आ गया। अब b कैसे निकाल सकते हैं? अब 1 टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, 1 में से बाकी सारे माइनस कर दें, and you would get the value for b as well। वो आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, of course as long as you're sure that this working is correct that you've done। जो रिमेनिंग केस है वो आप बस सबट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। So what do you do for that? You say b equals 1, which is the total probability, minus 3/80 minus 1/5 minus 3/10 minus 7/80। Put that in your calculator and see what that gives you। 1 minus 3/80 minus 1/5 minus 3/10 minus 7/80, and that is giving me 3/8। So the value of b therefore turns out to be
3/8. Okay, and that's the third value that we were looking for. We have the values for A, B, and C here. ठीक हो गया? Let's move on. Now it says find the expected value of x. Probability distribution table आपके पास आ गया. A की value क्या होगी? A की value is 1/5. Let's just input that here. 1/5. B is 3/8. And C is 3/10. Expected value का formula आपके पास formula sheet में दिया होता है. वो क्या होता है? Expected value of x is equal to sigma xp. X और p को multiply करेंगे, उन सबको add कर लेंगे. First में 0 आएगा. Then you have 1/5. Then you have 2 into 3/8, that's 6/8. Then 3 into 3/10, that's 9/10. You have 7 into 4, that's 28. 28/80. Just add all of these numbers up. हमने क्या किया? हमने xp calculate किया. And that's going to give you sigma xp. इन सब numbers को add कर लें. देखें आपके पास क्या आ जाता है. 1 divided by 5 plus 6/8 plus 9/10 plus 28/80. And that is giving me, let me check this again, 1/5, that is fine, into 6/8 plus 9/10 plus 7 into 4 is 28, 28/80. And that turns out to be 11/5. Okay, so this is 11/5, and that is 2.2 in decimals. इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं. हमने working ऊपर दिखा दिया. यहाँ पे आप final answer लिख सकते हैं. This is 11/5, which is 2.2, and that's your final answer. Okay, this was pretty straightforward. Let's move on to the next one. Now it says Jacob throws all 4 coins together 10 times. Okay, अब देखिए same चीज वो बार-बार कर रहा है. Something is being repeated. Okay, that should ring a bell. That should remind you of something. He's doing the same thing 10 times. Okay, experiment repeat हो रहा है. ये अक्सर कब होता था? जब हम binomial distribution में कोई चीज जो कर रहे होते थे या geometric में कर रहे होते थे, वहाँ पे repetition होती थी, right? We have to find the probability that he obtains exactly one head on fewer than 3 occasions. Okay. अब देखें, उसने कहा है exactly one head आना चाहिए less than 3 occasions पे. If you think about this, this is a situation that can be formulated as a binomial distribution. Why? Because something is being repeated multiple times. 10 times repeat कर रहे हैं. You know the number of times it's repeated. n की value 10 है. You have 2 possible outcomes. अगर हम इस तरह से इसको formulate कर लें कि या तो exactly one head आता है, that would be a success. Exactly one head आना, अगर इसको हम success कह लें, तो exactly one head ना आने को हम कह सकते हैं failure है, right? और हमें find क्या करना है? Number of successes. Number of times we're getting this, तो number of successes की बात हो रही है. This is actually a binomial distribution. अब इस binomial के parameters क्या होंगे? Let me just write them down here. Number of times you're repeating this, आप 10 times repeat कर रहे हो, तो n की value 10 होगी. What about the probability of success? The probability of success is the probability of obtaining exactly one head जब उसने 4 coins toss किए. Now, haven't we actually calculated this before? 4 coins को वो toss करता है, उसमें से exactly one head आने की probability कितनी है? उसने दिया हुआ था यहाँ पे. Exactly one head आने की probability is 1/5. उसने इसलिए show करने के लिए कहा हुआ है यहाँ पे. उसने आंसर दिया हुआ है आपको, ताकि आप अगर ये वाला पार्ट नहीं भी होता, आप नेक्स्ट पार्ट पर भी कर सकें. तो 1/5 आपने यहाँ पे यूज करना है as the probability of success in this case. If the probability of success is 1/5, what about the probability of failure? That's going to be 4/5. तो ये आपके पास एक binomial distribution है. You want fewer than 3 successes. Fewer than 3 successes. So what you're looking for is probability of x less than 3. Probability of having less than 3 successes. X को हम यहाँ पे कैसे define कर रहे हैं? This is the number of successes. That's what x represents in binomial distribution. Now, what's the formula that we have for binomial distribution? This is what it looks like. X equals R is NCR P raised to power R into Q raised to power N minus R. We just have to input values in that. X less than 3 का क्या मतलब है? You could have 0 success, or you could have 1 success,
or you could have 2 successes. 3 नहीं हो सकती, इसने कहा fewer than 3, तो 3 included नहीं है. 0, 1 या 2 successes हो सकती हैं. ये तीनों input कर दें, यहाँ पे n की value 10 डालें. 10c 0 into p, which is 1/5, and say that's 0.2. Yeah, 1/5 input कर देते हैं. 1/5 into raised to power 0 into 4/5 raised to power 10 plus 10c1 into 1/5 raised to power 1 into 4/5 raised to power 9 plus 10c2 into 1/5 raised to power 2 into 4/5 raised to power 8. ये आप evaluate कर लें. That is going to give you the probability that you are looking for. Okay, let's figure this out. 10c0 into 0.2 into raised to power 0 into 0.8 raised to power 10 plus 10c1 into 0.2 into 0.8 raised to power 9 plus 10c2 into 0.2 squared into 0.8 raised to power 8. Okay, so this is giving me 0.678 as the final result. Okay, and that's your final answer here. If your final answer is correct, you would get full marks for this. अगर आपने ये वाला ऊपर वाला step of course show किया. अगर आपका final answer नहीं है सही, तो फिर आपको ज़्यादा partial marks मिल जाते अगर आपने यहाँ पे ना एक और step show कर देते. आप इनकी individual values भी लिख देते. तो यहाँ पे ये वाले evaluate करके लिख लें, ये evaluate करके लिख दें, ये evaluate करके लिख दें. तो अगर आपका फाइनल आंसर गलती से कोई वहाँ पे केयरलेस एरर हो गया, तो फिर आप अगर एक स्टेप और शो कर देंगे तो मोस्ट लाइकली उससे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे. अगर आपका फाइनल आंसर इस तरह से गलत हो जाए तो फिर आपको सिर्फ 1 मिलता इस वाली वर्किंग का. तो इट्स बेटर कि आप स्टेप बाय स्टेप अलग अलग आंसर्स यहाँ पे लिख दें और उसके बाद फिर एक फाइनल आंसर लिखते हैं. ओके, अगर आपको श्योर है कि फाइनल आंसर सही है तो फिर आप डायरेक्टली लिखते हैं. That's also okay. अच्छा, part D. It says find the probability that Jacob obtains exactly 1 head for the first time on the 7th or 8th time that he throws the 4 coins. Now, again, this should ring a bell. Exactly 1 head for the first time on the 7th or 8th attempt. First time कुछ होने से अब कुछ याद आ रहा है? What is that? That's geometric distribution. जब हम फाइंड कर रहे होते हैं कि फर्स्ट सक्सेस एक पर्टिकुलर रेपिटेशन पे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. सो दिस इज एक्चुअली ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? फर्स्ट सक्सेस की बात कर रहे हैं. सो दिस इज अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. सक्सेस क्या है यहाँ पे? सक्सेस अभी भी वही है, एग्जैक्टली 1 हेड आने को उसने सक्सेस कहा है. 4 में से 1 हेड आना, 1 हेड आना इज सक्सेस. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ पे क्या हो जाएगी? इट्स गोइंग टू बी द सेम एज बिफोर, दैट्स 1/5. What are we looking for? We're looking for the probability that the first success comes either on the 7th attempt or the 8th attempt. तो हम क्या कहेंगे? x equals या तो 7 हो या फिर 8 हो. इन दोनों की probabilities हमने ऐड कर लेनी है. Remember the geometric distribution formula? It's q raised to power r minus 1 multiplied by p. Remember यहाँ पे R क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? नंबर ऑफ ट्रायल, कितनी दफा आप रिपीट कर रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पे 7 और 8 यहाँ पे R की वैल्यूज होंगी. फॉर्मूला शीट में ऐसा लिखा होता है 1 minus p whole raised to power r minus 1 into p. That's also fine. 1 minus p को हम q अक्सर लिख लेते होते हैं. ठीक है, अच्छा, let's just input values now. 7 वाले केस में क्या बनेगा? probability of failure क्या है यहाँ पे? 4/5. So that's 4/5 raised to power 7 minus 1, that's 6 into 1/5 plus 4/5 into 8 minus 1, which is 7 into 1/5. इन दोनों में से कोई भी एक केस हो सकता है. हमने इन दोनों की probabilities निकाली, उनको ऐड कर लिया, and that is going to give you the result. ठीक है, ये देख लें क्या आता है. 0.8 into raised to 0.8 raised to power 6 into 0.2 plus 0.8 raised to power 7 into 0.2. Evaluate this and see what that turns out to be. This is 0.0944. That's the result that you get from this. Okay, let's move on to question number 5. Now, this is the normal distribution. ये भी देख लेते हैं. इसके बाद क्या है?
probability. Okay, let's take a 1-minute break. There's a sound going on here. We'll complete this paper and then we'll have maybe a 10-15 minute break. उसके बाद फिर हम second paper start करेंगे. But for now, let's have a 1-minute break. अब इसके बाद फिर हम ये करते हैं question number 5 and 6. All right, let's do this. So it says the lengths in centimeters of the leaves of a particular type are modeled by the distribution 5.2, normal distribution 5.2 and 1.5 square. इसका मतलब क्या होता है? Mean is 5.2. First value mean को represent कर रही होती है. Second value variance होती है. Variance is 1.5 का square. Standard deviation क्या हो जाएगी? 1.5. Okay, standard deviation here is 1.5. We need to find the probability that a randomly chosen leaf of this type has length less than 6 centimeters. Okay, data given है, आपको probability निकालनी है. Simple normal distribution है ये. We need to find the probability of x being less than 6, such that हम length को किससे represent कर रहे हैं? X से represent कर रहे हैं. X less than 6 की probability निकालनी है. Now, how do we do that? सबसे पहले इसको z में convert कर लेते हैं. It becomes probability of z less than, z का formula आपके पास क्या होता है? Z is equal to x minus mu over sigma. उसके अंदर values input कर दें. X is what? 6 minus mu is 5.2 divided by sigma, which is 1.5. And this gives you z less than 0.8 over 1.5, and that is 0.53333. z की values हम 3 decimal places तक लिख रहे होते हैं. उसको as it is छोड़ दें. अब हम देखेंगे कि ये हम टेबल से देख सकते हैं या नहीं देख सकते. This is already the standard form. आपको टेबल यूज करने के लिए कौन सी फॉर्म चाहिए होती है? z less than a positive number. This is that form. This is z less than a positive number. ये नंबर हम जाकर डायरेक्टली टेबल से देख सकते हैं. इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. 0.533 पे देखते हैं टेबल में क्या वैल्यू आती है. Okay, so we know that z is 0.533. Achha. 0.5 is here, 3 is here, and that is giving us 0.7019. इस पे राइट साइड पे जाके देखें, 3 आपके पास थर्ड डेसिमल प्लेस पे आ रहा है और ये आ रहा है 10 यहाँ पे. So what do we get from this? We have probability for this equal to 0.7019 और इसमें क्या ऐड करेंगे? 10 add करेंगे last 2 decimal places के अंदर. This turns out to be 0.7029. That's the probability that we're looking for. यहाँ पे जाके हम लिख देंगे. This is 0.7029. That's the answer that we get in the first part here. ठीक है? Okay, let's move on. इसको as it is छोड़ सकते हैं. Round off करना चाहे तो round off कर दें. 3 significant figures पर. This is also fine. The lengths of the leaves of another type are also modeled by a normal distribution. A scientist measures the lengths of a random sample of 500 leaves of this type and finds that 46 are less than 3 centimeters long and 95 are more than 8 centimeters long. Find estimate for the mean and standard deviation of the lengths of leaves of this type. यहाँ पे देखें उसने probabilities दी हुई हैं एक तरह से. यहाँ पे उसने probabilities दी हुई हैं और आपको
डेटा में से कोई मिसिंग चीज फाइंड करनी है, you have to find the mean and the standard deviation, right? मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है. That is what you have to figure out. Okay? अच्छा, अब ये कैसे देखेंगे? Let's write it down first of all. This is probability of x less than 3 centimeters. यहाँ पे इसकी लेंथ को हम x कह रहे हैं, right? तो less than 3 centimeter लेंथ की क्या probability है? Out of 500, 46 ऐसे हैं जिनकी लेंथ less than 3 centimeter है. तो probability क्या होगी? अगर एक random sample इसको assume करें, 500 में से 46 अगर less than 3 centimeter है, तो probability क्या होगी? 46 over 500. What does that give us? Probability of x less than 3 is equal to, let's evaluate this. I think it's going to be 0.92 or 0.092, 46 divided by 500. Yeah, so that's 0.092. 0.092. That's one thing that we have. और उसने कहा है out of 500, 95 are more than 8 centimeters long. So that means probability of being more than 8 centimeters long is 95 over 500. Let's evaluate this as well. X greater than 8 की probability आपके पास क्या आती है? 95 divided by 500, that is giving me 0.19. Okay? ये आपके पास दो pieces of information है, probabilities given है, आपको mean और standard deviation निकालना है. Okay? Zara, we will be doing that paper most likely this Sunday, inshallah. Okay, coming Sunday, the day after tomorrow, I plan to do that paper, inshallah. Okay? All right. ये हमारे पास दो pieces of information है. Let's see how much space we have. Okay. अब हमें क्या करना है? Mean और standard deviation निकालना है. Mean and standard deviation. Inverse normal use करना है इसमें, right? सबसे पहले क्या करते हैं, हमें फिगर आउट करना है z पॉजिटिव है या नेगेटिव है. इन दोनों केसेस के अंदर z की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस तरह लिख देते हैं, इसको z की टर्म्स में लिखते हैं. This becomes z less than something that is equal to 0.092. And in the other case, we say z greater than something is equal to 0.19. And now we think of the normal distribution curve. Sorry, this is what the curve looks like roughly. Okay. अब देखें, z less than something is equal to 0.092. इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट पे एरिया है, area to the left, that is, if you compare with 0.5, this is less than 0.5. लेफ्ट साइड पे जो एरिया है वो 0.5 से कम है. तो z को हमें कहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा? रिमेंबर, दरम्यान में बिल्कुल 0 होता है, दोनों साइड पे 0.5 प्रोबेबिलिटी होती है. अगर हम z को लेफ्ट पे प्लेस कर देते हैं, तो इसके लेफ्ट पे जो एरिया है वो कितना है? वो 0.5 से कम है. That's exactly what we want. So z should be here on the left side. इसका मतलब ये है कि z जो है that's actually a negative number. असल में जो z की वैल्यू एंड पे आएगी वो नेगेटिव होगी. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं z is supposed to be negative. अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये टेबल से हम नहीं देख सकते. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है टेबल को यूज करने के लिए? z less than a positive number. We need something in this form. Okay? अब हमें क्या पता है, जो ये वाला एरिया लेफ्ट साइड वाला, z की नेगेटिव वैल्यू के लेफ्ट साइड वाला, that is equal to 0.092. हम इसको फ्लिप करते हैं. सबसे पहले z की जो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर होगी, उसके राइट साइड पे भी उतना ही एरिया होना चाहिए जितना ये येलो वाला पार्ट है, राइट? सिमेट्रिकल कर्व. तो राइट साइड वाला एरिया भी कितना होना चाहिए? 0.092 होना चाहिए. लेकिन अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हमें तो लेफ्ट साइड वाला एरिया चाहिए होता है किसी पॉजिटिव वैल्यू की टेबल यूज करने के लिए. तो 0.092 अगर ये वाला एरिया है, तो ये टोटल एरिया टू द लेफ्ट ऑफ दिस ये कितना हो जाएगा? 1 minus 0.092. ये हम evaluate करते हैं. Let's see what that turns out to be. 1 minus 0.092, that is giving me 0.908. That means
ये जो हमने ऊपर लिखा हुआ है इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, z लेस देन द पॉजिटिव वैल्यू z दैट इज इक्वल टू 0.908। अब ये वैल्यू हम जाके टेबल्स में देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कहाँ पर आ रही है हमारे पास 0.908, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग z वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ने कर दिया टेबल को यूज करने वाली। अब टेबल में जाके देखते हैं 0.908 कहाँ पर आ रहा है। ओके, दिस इज द टेबल, 0.908 ढूंढते हैं यहाँ पे। Probability, right? 0.908. Write that down on the side here. 0.9080. That's what we're looking for. Okay, so we have 0.9066 here. उसके बाद 908 से बड़ा नंबर आ जाता है, तो हमें छोटा वाला नंबर लेना होता है। इसका हम देखते हैं इस पे क्या वैल्यू मिल रही है, 1.32। तो z की वैल्यू हमारे पास आती है यहाँ पे, दैट इज 1.32। नाउ वी नीड टू थिंक ऑफ द थर्ड डेसिमल प्लेस। हमें क्या मिला है यहाँ पे, 0.9066। तो एंड पे कितना ऐड करना पड़ेगा, 14 और ऐड करना है। अब राइट पे जाके देखते हैं यहाँ पे 14 किधर आ रहे हैं। Well, we have 14 here, and that corresponds to 9 as the third decimal place for z. So we have 1.329 as the value of z from that. 1.329. Let's put that here. यहाँ से हमें मिला कि z की जो पॉजिटिव वैल्यू है that is 1.329. But remember, actual z was this here. तो z की जब वैल्यू हम फॉर्मूला में डालेंगे वो नेगेटिव वैल्यू डालेंगे। So we write this down here. We say z equals x minus mu over sigma. Z की वैल्यू असल में क्या है, नेगेटिव। So this is going to be minus 1.329 equals x. X की जगह पे 3 आ रहा है, minus mu over sigma. This is one equation that we have in terms of mu and sigma. We need another equation ताकि उसके साथ हम इसको simultaneously solve करके value figure out कर सकें। ठीक है, let's look at the second equation that we're given here. Z greater than something is 0.19. Now again, we need to think of the normal distribution curve and think about whether Z is positive or negative first of all. अब यहाँ पे देखें right side की बात हो रही है because greater than का sign है, so area to the right. How much is that? Area to the right is less than 0.5. Right side वाला area 0.5 से कम है, तो अब Z को किधर प्लेस करेंगे? Z को पॉजिटिव साइड पे अगर प्लेस करें तो राइट साइड पे एरिया कम आता है, अगर नेगेटिव साइड पे प्लेस करेंगे तो राइट साइड पे ज्यादा एरिया हो जाएगा। तो z को हमें पॉजिटिव साइड पे प्लेस करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये होगा z शुड बी हियर एंड दिस रीजन इज गिवन। तो यहाँ पे z लिख लें, z असल में यहाँ पे पॉजिटिव ही है। राइट साइड वाला एरिया कितना है, दिस एरिया इज 0.19। अगर राइट वाला एरिया 0.19 है तो लेफ्ट वाला टोटल कितना होगा, 1 में से माइनस कर दें, दैट्स गोइंग टू बी 0.81। So we can convert this thing, this probability that's given here, to a form like this, to the standard form, z less than the positive value of z. That should equal 0.81. अब ये जाके probability table से देख लेंगे, 0.81 का मतलब है 0.8100. All right? ये हम जाके table से देख लेते हैं। Let's go to the table again. 0.8100. इसके corresponding we need the z value. अच्छा देखते हैं 8100 कहाँ पर आ रहा है। Okay, so we have 8078 here. इससे बड़ा वाला नंबर 8100 से बड़ा हो जाता है। So we take the smaller number. इस पे देखते हैं हमारे पास corresponding z क्या आता है, 0.8 and 7. So z is 0.87 until this point. लेकिन हमें नंबर कौन सा मिला है यहाँ पे, 0.8078। इसमें कितना आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, 22 का एंड पे। ठीक है, तो 22 और ऐड करना है, 22 यहाँ पे राइट मिल रहा है हमें कहीं पे, दिस इज 22 and that corresponds to 8 here as the third decimal place of z. तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.878। ठीक है, ये जाके वहां पे इनपुट कर दें। This is giving us 0.878 as the value for z. Now remember, z is positive, तो जब फॉर्मूला में इनपुट करेंगे इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही इनपुट करेंगे। z की जगह पे आप क्या इनपुट कर देंगे, 0.878 minus x equal to x minus mu over sigma
x की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 8 minus mu over sigma. Now you have two equations, you can solve them simultaneously and find the values of sigma and mu. All right, so इसको हम अगर इस तरह कर लें, sigma equals 3 minus mu over minus 1.329, and from here we get sigma equals 8 minus mu over 0.878. इन दोनों को equate कर लें, we get 3 minus mu over minus 1.329, that equals 8 minus mu over 0.878. यहाँ से आप mu की वैल्यू फिगर आउट कर लें, देखें आपके पास क्या आता है. अच्छा, 0.878 into 3, that is 2.634 minus 0.878 into mu. On the other side, I have 8 into 1.329, that is giving me minus 10.632. जब ये जाके वहां पे मल्टीप्लाई होगा, म्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आ जाएगा प्लस 1.329 म्यू. म्यू वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाएं, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाएं, सब पास म्यू आ जाएगा. ओके, लेट मी डू दैट. 2.634 plus 10.632 divided by 1.329 plus 0.878. And this is giving me mu equal to 6.011. Okay, mu turns out to be 6.01. That's the value of mu that we have. आपको एक चीज ये फाइंड करनी थी, इसको वापस इनपुट कर दें किसी भी एक इक्वेशन के अंदर ऊपर, and that will give you the corresponding value for sigma. इसमें इनपुट कर दें, for instance, sigma equals 3 minus 6.01 divided by minus 1.329. Evaluate this and see what this turns out to be. Remember, स्टैंडर्ड डिविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो अगर आपको नेगेटिव आंसर आ रहा है किसी वजह से, दैट शुड रिंग अ बेल एंड यू शुड नो दैट दैट कैन नॉट बी करेक्ट. आपने कोई केयरलेस एरर किया. तो यहाँ पे ऊपर भी नेगेटिव है, नीचे भी नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे. एंड दिस इज गिविंग मी जस्ट चेक दैट अगेन, 3 minus 6.011 divided by 1.329, and that turns out to be 2.2656. इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 2.27. म्यू की जरा ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू यूज करनी है अपने नेक्स्ट आंसर के अंदर, अदरवाइज वो फिर सही नहीं आ रहा होगा. ठीक है, ज्यादा एक्यूरेसी थोड़ी सी खराब हो सकती है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा दैट वी गेट. वी हैव म्यू एंड सिग्मा. दैट्स ऑल दैट वी नीडेड इन दिस पार्ट. Okay, I hope that makes sense. Let's look at the last part now. It says in a random sample of 2,000 leaves of the second type, how many would the scientist expect to find with lengths more than one standard deviation from the mean? Remember, Z values क्या represent कर रही होती हैं आपकी? Z values represent कर रही होती है number of standard deviations that you're away from the mean. Okay? If you want to be more than one standard deviation away, what does that mean? अगर दरम्यान में 0 है, हम Z की बात करें, राइट, लेफ्ट पे -1 होएगा, राइट पे 1 होएगा. You want to be either on this side or on this side. On a normal distribution curve, इसमें आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती. दोबारा से Z की वैल्यू आप निकालेंगे भी तो इवेंचुअली यही आएगा, आप ये डायरेक्टली कर सकते हैं. Your normal distribution curve is going to look something like this, perhaps. Okay, something like this, right? In the middle, you have 0. What you want is the region to the right of one standard deviation away, more than one standard deviation from the mean. So mean 0 होता है, right side पे या तो आपको ये वाला region चाहिए, या फिर आपको left side पे ये वाला region चाहिए. That's what you're looking for. इन दोनों में से कोई एक आपको कैलकुलेट करना, इनफैक्ट दोनों कैलकुलेट करने हैं, दोनों को ऐड करना. ठीक है, नाउ since the curve is symmetric, आप इन दोनों में से कोई भी एक निकाल सकते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. That will give you the result. Okay, so let's do that.
इससे हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करती होगी। हमें एक्सपेक्टेड नंबर निकालना है, वो हम देखते हैं बाद में। अभी हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं टू सैटिस्फाई दिस कंडीशन, मोर देन वन स्टैंडर्ड डेविएशन अवे फ्रॉम द मीन। दैट मींस आइदर वी वांट z लेस देन -1 और z ग्रेटर देन 1। इन दोनों में से कोई भी एक कैलकुलेट कर लें, क्योंकि दोनों इक्वली होंगे, एक कैलकुलेट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेट मी फाइंड z ग्रेटर देन 1, ये फाइंड कर लेता है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ना, हमें चाहिए होता है z लेस देन अ पॉजिटिव नंबर। दिस इज नॉट दैट फॉर्म येट। तो इसको हम लिख सकते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा, राइट साइड वाला एरिया निकालने के बजाय अगर हम ये लेफ्ट वाले एरिया निकाल लें, इसके 1 में से माइनस कर देंगे ये, तो ये येलो वाला पार्ट आ जाएगा। So we could write this as 1 minus probability of z less than 1. All right. And now this is something that we can use the table for. Z की वैल्यू 1 के corresponding आप देख लें आपके पास probability क्या आती है टेबल में। This is Z1, इसमें ये लिखा हुआ है 0.8413, right? थर्ड और सेकंड और थर्ड डेसिमल प्लेस 0 है, तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस आपने बस देखना है, वो भी 0 इनफैक्ट 1.0 चाहिए आपको, तो 0.8413. This is the probability that you have, 0.8413. And now we just calculate this. Let's see what this turns out to be. 0.1587, I think. Just confirm 1 minus 0.8413. Yes, that's 0.1587. अगर ये आ गई है तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इन दोनों केसेस की? ये दोनों इक्वल है ना, सिमेट्रिक कर्व है। टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास जो होगी वो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगी। 0.1587 multiplied by 2. Let's see what that turns out to be. This is 0.3174. ये आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो एक लीफ की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि उसकी लेंथ जो है वो मोर देन वन स्टैंडर्ड डेविएशन अवे फ्रॉम द मीन है। एक लीफ की प्रोबेबिलिटी ये आ गई है। अब 2000 में से कितने लीव्स आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको बस 2000 से मल्टीप्लाई कर दें। Expected number of leaves with satisfying this condition, that's going to be 2000. The total number multiplied by the probability 0.3174. Let's see what that turns out to be. 0.3174 into 2000, and that is giving me 634.8. Now, since we are talking about number of leaves, it's better to write it as an integer. इसको round up करके आप क्या लिख देंगे? This is 635, and that's the expected number that you have. Okay. All right. Let's move on to question number 6 and complete this paper quickly. So this person, Janice, is playing a computer game. I have 3 parts to this as well. Okay. Janice is playing a computer game. She has to complete level 1 and level 2 to finish the game. She is allowed at most 2 attempts at any level. Okay, for level 1, the probability that she completes in the first attempt is 0.6. If she fails at her first attempt, the probability that she completes in the second attempt is 0.3. If Janice completes level 1, she immediately moves on to level 2. For level 2, the probability that she completes the first attempt is 0.4. If she fails at her first attempt, the probability that she completes in the second attempt is 0.2. Show that the probability moves on to level 2 is 0.72. Okay, so the probability of her moving on to level 2, what is that? Let me actually think about it again. एक दफा आराम से इसको पढ़ लें एक दफा. At most 2 attempts allowed हैं at any level. So that's one thing that you have. Probability that she completes at the first attempt is 0.6. If she fails the first attempt, the probability that she completes the second. Okay. अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर ना, it's going to help you if you draw a tree diagram शुरू में. Okay, first part भी आसान हो जाएगा, बाकी parts भी आसान हो जाएंगे. ठीक है, ऑल्दो आपका फर्स्ट पार्ट डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट एक दफा प्री डायग्राम बना लेंगे ना, सारे क्वेश्चंस थोड़े से आसान हो जाएंगे.
So let me do it directly first of all. अगर वो level 2 पे move करती है, उसकी क्या probability है? Level 2 पे कैसे move करेगी? Level 2 पे move करेगी कि उसका first level clear हो जाए. First level clear होने की क्या possibilities है? या तो वो first attempt में clear कर ले, that's 0.6, that's one possibility. या फिर first attempt उसकी fail हो जाए. First attempt fail होने की क्या probability होगी? 0.4. और फिर first attempt fail होने के बाद वो second attempt पे successful हो जाए. That is 0.3. तो उसको 0.3 से multiply करोगे and that is going to give you the result. Let's see what this turns out to be. 0.6 into 0.4 into plus 0.4 into 0.3, that turns out to be 0.72. इसको आप इस तरह से डायरेक्टली सोच सकते हैं, राइट? अगर आप ट्री बना लेंगे तो ये वाला पार्ट भी आसान हो जाएगा, ठीक है? Now let me actually make a tree diagram because we are going to need that probably for the next part. Let's look at the second part. Is find the probability that Janice finishes the game. That means that she completes level 1 and also level 2. अब इसके बहुत सारे cases बन सकते हैं. So the safer option is going to be that you draw a tree diagram for this. Let's draw that tree diagram. First case में क्या first attempt में क्या possibility होगी? She either is successful, जिसको हम क्या करते हैं, इसको दो नाम दे देते हैं, completes okay, so she's either successful or she either fails. Okay, ये उसकी first attempt है at level 1. So let me label this here. Let's say क्या कहें, level 1 first attempt. Okay, yeah, so 1-1. Then you have level 1 second attempt. Second attempt में अच्छा अगर first में successful हो गई है, first में successful हो गई तो वो second में move कर जाएगी already. Second में क्या possibility है? या तो वो second में directly successful हो जाए, या फिर second में fail हो जाए, second level पे fail हो जाए, और फिर उसको दोबारा एक chance मिले और वो फिर successful हो जाए, या फिर वो दोबारा fail हो जाए. This is one possibility. Now let me actually break it down. इसको हम थोड़ा सा clear हो जाए ताकि आपको समझ आ जाए. इसी तरह से इसमें labeling थोड़ी सी change कर लेता हूँ. इसको हम कैसे नाम दें? First success or second failure. How do we label this? इसको हम ऐसे कर लेते हैं. This is level 1. ये तो clear है. Level 1 की ये first attempt है. Level 1 की ये first attempt है. ठीक है. अब second अगर तो वो successful हो जाती है तो ये ऊपर वाला part जो है ना, ये level 2 पे चला गया. ये पूरा part जो है, इतना part ये level 2 है. ठीक है. Now what I'm going to do for that is I'm going to use a different color here. Yeah, that might be easy. ये level 2 आ गया. Level 2 में she either is successful on the first attempt or she fails the first time, and then the second time she either is successful or fails. Okay. If she fails at the first attempt on level 1, she has another chance on level 1. On that second chance, she either is successful or she fails. Okay. If she fails, then the game ends there. If she is successful, she moves on to the second level. So she's either successful there or she fails. If she's successful, the game finishes. If she fails, she has another attempt, and in that attempt, she can either be successful or fail again. This is what the tree diagram is going to look like. The blue part represents level 1, and the green part represents level 2. ठीक है? This is how it looks like. अब देखिए probabilities यहाँ पे mention कर देते हैं. First attempt, first level पे, first attempt में probability क्या है successful होने की? 0.6. Let's write down those probabilities. This is 0.6. तो failure की कितनी हो जाएगी? 0.4. If she failed at her first attempt, the probability that she completes it at the second attempt is 0.3. Okay, second attempt में successful होने की 0.3 probability है, fail होने की probability 0. No, sorry. इसमें तो नहीं आएगा. First level की बात हो रही है अभी.
सक्सेसफुल होने की 0.3 प्रोबेबिलिटी है, फेल होने की 0.7 प्रोबेबिलिटी यहाँ पर होगी। ये फर्स्ट लेवल का हमने कर लिया, ठीक है। अच्छा, if she completes level 1, she moves to level 2. For level 2, the probability that she completes at the first attempt is 0.4. Okay, so यहाँ पे probability of completing at the first attempt is 0.4. This is 0.4. This is also 0.4. If she fails at her first attempt, the probability that she completes it at the second attempt is 0.2. अच्छा, fail करने के बाद, अच्छा, इसमें failure की probability है क्या 0.6, यहाँ पे 0.6. fail करने के बाद क्या probability है that she completes it at the second attempt? That is 0.2. That means this is 0.2 and this is 0.2. तो ये कितना हो जाएगा 0.8 and this is also 0.8. If you're able to successfully make this tree diagram, the rest should be pretty straightforward after that. Probability that she finishes the game. What cases are we talking about here? Finish game का क्या मतलब है? Second level पे भी जाके she is successful. कौन सा केस हो सकता है? या तो वो ये वाला केस होएगा, या ये वाला केस होएगा, या ये वाला केस होगा। ये 3 केस है, ठीक है। तीनों सक्सेसफुल या एक और भी है, ये भी है। दोनों फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल, दैट्स वन केस। देन फर्स्ट सक्सेस और फर्स्ट लेवल में फर्स्ट सक्सेस आ गई, सेकंड लेवल के लिए एक दफा फेल हुई फिर सक्सेस आ गई, ओके। अच्छा, उसके बाद एक और पॉसिबिलिटी क्या, फर्स्ट में शी फेल्ड एंड देन वाज सक्सेसफुल एंड सेकंड लेवल में उसने फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल हो गई, एंड देन शी फेल्स once at the first level, then is successful, and fails once at the second level as well, and then is successful after that. ये 4 केसेस आपके पास इसके बनेंगे, इनकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लेट्स इवैल्यूएट दिस प्रोबेबिलिटी। दिस इज 0.6 into 0.4. ये मल्टीप्लाई करके देख लें, 0.24 आ जाएगा। ये वाला केस देख लें, नोड्स ब्रांचेस पे सारी प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई करनी है, 0.6 into 0.6, ये वाला पाथ फॉलो करें, 0.6, 0.6, 0.2, ओके। ये देख लें क्या आता है, 0.36 into 0.2, that's going to be 0.072. And then you have this one, ये पाथ फॉलो करें, 0.4, 0.3, 0.4, that's 0.4, no, 0.4, 0.3, 0.4. Let's see what that turns out to be. 0.4 into 0.3 into 0.4, that is 0.048. And then we have this one. इसमें कौन सा पाथ फॉलो हो रहा है, failure, success, failure, success. This turns out to be 0.4 into 0.3 into 0.6 into 0.2. ये देख लें क्या आता है, 0.4 into 0.3 into 0.6 into 0.2, that turns out to be 0.0144. इन सारे केसेस को आपने ऐड कर लेना है, 0.24 plus 0.072 plus 0.048 plus 0.0144. Let's see what that turns out to be. In a way, it's very similar to that game show wala question, if you remember. Audience wala jo question tha, help lifelines wala. It's very similar to that. It's a 0.24 plus 0.072 plus 0.048 plus 0.0144. And that is giving me 0.3744. And that's what your final answer here turns out to be. Okay, I hope that makes sense. Let's look at the next part. It says find the probability that Janice fails exactly one attempt given that she finishes the game. So this is conditional probability given that she finishes the game. How do you find this out? Probability that she fails one attempt given that she finishes the game. ये आपको figure out करना है. Now this is conditional probability, right? Conditional probability का formula आपके पास क्या होता है? You can write that here on the side.
probability of A given B, that is equal to probability of A intersection B divided by probability of B. That's what the formula is for conditional probability. इसमें क्या हो जाएगा? Failing one attempt and finishing इसका intersection fails one, intersection finishes जहां पे दोनों कॉमन है, divided by probability that she finishes. Probability of finishing हमने पिछले पार्ट में भी फाइंड किया है. Probability of finishing क्या थी? 0.3744. That's the denominator. अब इसका intersection with failing only one attempt. अब इन चारों में से कौन से केसेस में से she failed exactly one attempt? एक ये वाला केस है सेकंड और एक ये थर्ड वाला केस है. ये दोनों आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएंगे यहाँ पे 0.072 plus 0.048. Just calculate what this probability turns out to be. 0.072 plus 0.048 divided by 0.3744, and that gives you 0.32051. Round off करके ये आपके पास आ जाएगा 0.321. And that's your final answer. अगर आपने second part कर लिया, the last part is actually much easier because वो third part में जो सारी working आपने की है, वही एक तरह से यहाँ पे use हो रही है. There is nothing new that you have to do in this last part. Okay, I hope that makes sense. अगर आपने वो वाला question किया था ना game show वाला, audience वाला, it's almost exactly the same. मतलब वही एक तरह से pattern follow हो रहा है. All right. Okay. Ahmed, the notes वहाँ पे सारे हैं. If you look at that link tree link, S1 के notes उस पे आपके सारे आने चाहिए. Let me actually check that again. हो सकता है वो update ना हुआ वहाँ पे. I will recheck that. Okay. वो मैं दोबारा से share कर दूँगा. So I'll check all those links today and I'll update that. Okay. Acha, so that's it for now. I also have to do the other paper today, but unfortunately, I'm running out of time right now. So what I'll do is I'll do the other paper, paper 5.3, possibly at some time later tonight. Okay, because I have an O-level class abhi thodi der baad. So 5.3 या तो मैं रात को लेट करूँगा या फिर कल रात को. ठीक है, कल I will also be doing 2 M1 papers. Okay, so keep that in mind. Next 2-3 days we'll be doing a lot of papers here. All right, so I'll see you again in the next session. Then make sure that you like the stream before you leave. It helps with engagement and more people finding the stream. You'll also find a lot of other helpful content in the description below. Have a look at those links. I've uploaded all my recordings for the complete syllabus, and also you'll find some quick revision videos there, and also the other yearly past papers. Okay, so that's it for now. I'll see you again in the next video, in the next stream. Allah Hafiz.